देखो, if you have any problem, then we can discuss. But problem will start when? Problem will start after this. Try, है ना? If we don't try, we don't get problem. Okay, but you know there are two ways. जैसे अगर if you want to do something, है ना? You want to do something. अगर कुछ अचीव करना है, so you'll get success or failure. Okay, you'll get success or failure. बट ये दोनों भी ट्राई करने करने के बाद ही आएंगे. You either get succeed or you either get failure. कब आएंगे? ये दोनों भी ट्राई करने के बाद ही आएंगे guys. So you need to try. Anyhow, you need to try. है ना? अगर if you don't try, ठीक है, ये क्या हो गया? ये दोनों बात. If you don't try, there is only one outcome, that is failure. If you don't try, there is only one outcome, only failure. But if you try, there is a 50% chances कि आप जीत जाओगे. And if you try with some guide, there are 150% chances you will get success. So let me be that guide for you guys. You know, let me be your guide for that. So try करो. Right? So let me tell you one story. Story. So कुछ दिन नहीं, कुछ महीनों पहले आई वांटेड टू लाइक स्टार्ट लर्निंग, है ना? कुछ सीखना था मुझे कि मुझे अपस्किल करना था, बिकॉज एआई में बहुत सारी चीजें हो रही है एंड देयर इज वेरी मतलब रैंडमली, मतलब देयर आर, ऐसा हो ही नहीं रहा था कि ऑफिस के टाइम के वजह से आई वाज नॉट एबल टू लर्न. ठीक है, आई वाज नॉट एबल टू लर्न. बट देन आई थॉट कि कुछ शुरू करते, सीरीज करते, किसी को सिखाते हैं. सो व्हाट विल हैपन इन दैट प्रेशर, आई विल लर्न, है ना? सो आई स्टार्टेड दिस विथ माई, जो पास के लोग थे उनसे, उनके साथ मैंने ये शुरू करा था. व्हाट दिस क्लास. तो उनको मैं सिखा रहा था. उनको सिखाने के चक्कर में मैं खुद सीख रहा था. राइट. एंड व्हेन आई वाज डूइंग दैट, सो देन वन प्रॉब्लम केम. राइट. व्हेन आई, तब मैंने कहा ना, राइट, ट्राई करोगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएगी. सो व्हाट प्रॉब्लम्स आई केम कि रिकॉर्डिंग चाहिए थी. फिर मैंने लैपटॉप में लोकली रिकॉर्डिंग करना सीखा, देखा. लेकिन फिर स्टोरेज की प्रॉब्लम आने लगी, सेकंड प्रॉब्लम. देन उसका सॉल्यूशन मैंने निकाला. आई स्टार्टेड पोस्टिंग ऑन यूट्यूब. राइट. बट नाउ आफ्टर दिस, लेट मी शो यू. अभी दिस इज नॉट रियली ग्रेट सक्सेस, इट्स नॉट रियली ग्रेट सक्सेस, बट इफ यू ऑलरेडी सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल, आप देख लो भाई कितने लोग देख रहे हैं. 1,000 से 1100 से ज्यादा लोग हो गए, 2100 से ज्यादा व्यूज हो चुकी है. एंड दिस इज जस्ट लाइक, अभी आप, यू कैन चेक द चैनल, राइट. डे 59 चल रहा है. इट इज ऑलमोस्ट 2 months आई एम कंसिस्टेंटली पोस्टिंग दिस फॉर स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स, राइट, जिनको सीखना था. सो दिस इज हाउ थिंग्स कैन चेंज फॉर यू. एंड नाउ यू कैन सी, हमारी बारी पहले एक ही बैच थी, अभी 2 बैच हो गई. आई डोंट नो, आई, मेरा स्टार्टिंग गोल क्या था इसमें? मुझे खुद को सीखना. आई आई वांट टू लर्न माई सेल्फ. मैं, आई लर्न मोर देन दिस. मैं बस सिखाने के लिए पाइथन सिखा रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत सारी चीजें करता हूँ. जैसे अभी ये तो एनएफएल में रन नहीं किया, लेकिन आई प्रिपेयर, आई बिल्ड आउट नो automations and all, lot of things. So if you, again I will come to that point only कि if you start, if you do something, you'll get something, है ना? कुछ टाइम कुछ कमेंट्स आती थी, आई विल, मुझे अगर मिलती है ना वो कमेंट्स, आई विल ड्रॉप इन द ग्रुप. क्या कमेंट्स रहती थी कि कोई देख नहीं रहा सर, लेकिन आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो. तो वो छोटी मोटी कमेंट्स भी इतना ज्यादा पुश करती थी ना कि आई वाज स्टिल वर्किंग, आई वाज स्टिल डूइंग समथिंग व्हेन no one was you know uh, watching me. So you also need to think that way कि यार मुझे करना है, वर्क इन साइलेंस बोलते ना. So one question from Shivapriya: Do you do Python Selenium automation? Yes, I do.
ऑटोमेशन रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो या कोई रिक्वायरमेंट है तो यू कैन ड्रॉप डायरेक्टली व्हाट्सएप, अभी ऑलरेडी है आपके पास। अदरवाइज जिनको ऑनलाइन चाहिए तो वो यहाँ पर मेल आईडी मिल जाएगा मेरा, यू कैन ड्रॉप रिक्वेस्ट देयर। एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट अगर आप डाल देते हो तो आई विल बिल्ड फॉर यू। ओके, सो डू ट्राई। ओके, ग्रुप में डालो, जो जो असाइनमेंट कंप्लीट कर रहा है डालो, वी विल टॉक। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो हम बात करेंगे, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन है वी विल डिस्कस। If yes, can you please teach us that too? It would be helpful with a framework creation. Yes, yes, of course, of course. तो हम जब Gen AI पढ़ेंगे ना तो आई विल टीच लॉट ऑफ थिंग्स, है ना? जो सिलेबस में नहीं है वो भी सिखाएंगे, जो आपको पर्सनली काम में आएगी। मैं बोला ना कि यू विल गेट सो मेनी थिंग्स जो आपकी खुद की लाइफ बहुत ज्यादा इजी कर देगी, ठीक है? बहुत ज़्यादा ईज़ी कर देगी इन टर्म्स ऑफ वर्क, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, एंड योर ओन वर्क विल विल मच हायर, ठीक है? तो बट वही है कि आपको बस बने रहना है एंड करते रहना है ना। स्टे विथ मी फॉर अ लॉन्गर टाइम। कुछ नहीं तो मतलब कुछ नहीं ऐसा होगा ही नहीं, आई गारंटी यू कि बहुत कुछ हो जाएगा जो आपने सोचा भी नहीं रहेगा कि अरे यार मैं तो बहुत सारी चीज़ें सीख गया इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है? अभी जो मॉर्निंग बैच कर रहे हैं उनका पाइथन और लाइक डेटा साइंस लाइब्रेरी भी ऑलमोस्ट बहुत सारी हो गई है। सो नाउ दे कैन लाइक विद इन 2 मंथ दे कैन स्टार्ट अप्लाइंग। एंड अगर आप पाइथन डेवलप सैलरी अगर पूछोगे तो दे विल लाइक इतना तो अर्न कर सकते हो, एवरेज है ये, ठीक है? अराउंड 7 लाख के आसपास उनको मिल सकता है, और आई थिंक इट शुड बी मोर देन, ज़्यादातर मतलब 15 लाख तक या मोर देन 16 लाख 15 लाख तक की सैलरी चली जाती है, ओके? एंड द फ्रेमवर्क दैट आई हैव फॉर जॉब अप्लाइंग एंड इंटरव्यू क्लियरेंस, उसके साथ तो आराम से आप 10 लाख का पैकेज निकाल सकते हो विद इन 2 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग ओनली। सो जब हम 6 मंथ ऑफ ट्रेनिंग 5 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे देन यू कैन थिंक ऑफ हाउ वैल्यूबल वी विल बी, राइट? हाउ वैल्यूबल वी विल बी। सो ट्राई करो, कहीं पे भी क्वेश्चन आ रहा है ग्रुप में डालो, मेरे को पर्सनल में डालो, बट करो, करोगे तो होएगा, अदरवाइज नहीं होएगा, है ना? ट्राई करोगे तो यू विल यू विल इवेंचुअली एंड अप हियर। ट्राई ट्राई ट्राई, इसके अंदर और 2-4 ट्राई रहते हैं, है ना? ओनली वन ट्राई से नहीं होता है, 2-3 ट्राई के बाद इवेंचुअली विल कम हियर। बट इफ यू डोंट ट्राई यू विल कम हियर, इफ यू ट्राई लेजीली यू विल कम हियर, इफ यू डोंट ट्राई सीरियसली यू विल कम हियर, है ना? फेलियर में मजा नहीं है, फेलियर में मजा नहीं। आई डोंट वांट माय स्टूडेंट टू बी अ फेलियर, ठीक है? सो एवरीवन, आज तो असाइनमेंट का लास्ट दिन था, बट यू टेल मी कब होगा, यू टेल मी कब होगा असाइनमेंट? वैसे तो आपने ही डेट बोली थी मंडे। एवरीवन, कब असाइनमेंट कंप्लीट होगी? टुमारो, टुनाइट, कल सुबह, कल दोपहर, वॉट एवर यू फील, ओके? एवरीवन, लाइक यस, नो, होगी नहीं होगी? अरे नो, ट्यूसडे, ट्यूसडे होगी, कल होगी, इन द टुमारो, समवन सेज टुमारो, इन द, ओके, रेस्ट कब होगी? होगी नहीं होगी, करना है नहीं करना है यार? कि वेंसडे, समवन सेज वेंसडे, ओके, समवन सेज टुमारो, टुमारो के लिए 2 वोट है, डे आफ्टर टुमारो वेंसडे के लिए 2 वोट है, ओके? वेंसडे के लिए 3 वोट हो गए, ओके? इतना ज्यादा तो टाइम नहीं लगना चाहिए यार इस वजह से, इतने ही क्वेश्चंस है, इसमें कुछ भी शायद एक हाथ दो कुछ इश्यू आ सकते हैं, अदरवाइज तो ऐसा कुछ है नहीं वैसे। चलो ठीक है, यू हैव टाइम टिल वेंसडे, यू हैव टाइम टिल वेंसडे। वेंसडे को आई विल अगेन
raise this poll. So you need to update everyone, like इसको update करो यार. अरे 3 ही लोग दिख रहे हैं जो कुछ कुछ कर रहे हैं. ठीक है. So update and so that we can. Okay, Wednesday को cool. चलो. So शुरू करते हैं with today's lecture. uh, so I hope ये सब आपने करा रहेगा. So I am not going to revise this. बस मैं ये दो फंक्शन बता देता हूँ. ठीक है. इंडेक्स फंक्शन एंड इंडेक्स नहीं, इंसर्ट फंक्शन एंड दोनों ही देख लेते हैं. ठीक है. So why I am taking these two functions? Because हम देख रहे, अरे कहाँ गया भाई, हम देख रहे, we are trying to learn addition addition of items in the function, addition of the items in the list. Okay, let me just turn off this camera. Okay, सब ध्यान दो. ठीक है. To pay attention everyone needs to pay attention. So we are learning how to add items in the Python. Okay, how to add items in the Python. So this is not in the list. मैं ही fumble कर रहा हूँ. So this is your list and we are adding items. Index insert me. So we are adding items in the list. So this is your list and we are inserting item at a very defined position. जैसे मैंने बोल दिया lst dot insert. I want BLR to at first position. ये यहाँ पर गई था. ठीक है, यहाँ पर गई था. So you can see BLR. नेगेटिव इंडेक्सिंग में भी मैं ऐड कर पा रहा हूँ एंड सो ऑन. ठीक है. सो वी आर लर्निंग एडिंग अ फंक्शन इन सॉरी एडिंग ए एलिमेंट इन लिस्ट. एडिंग ये वाला एलिमेंट इस लिस्ट में ऐड करना हम सीख रहे हैं. ठीक है. एंड वी विल बी कंटिन्यू द सेम इन टूडेज लेक्चर. ठीक है. वी विल बी कंटिन्यू. सो वेरी फर्स्ट फंक्शन हमने देखा व्हाट, इंसर्ट. इंसर्ट फंक्शन में व्हाट्स द सिंटैक्स इज, आपको इंडेक्स बताना होता है इन द वैल्यू. ठीक है. सो एट लोकेशन फर्स्ट ऐड BLR. एट लोकेशन फर्स्ट तूने 0, सो एट फर्स्ट लोकेशन ऐड BLR. ठीक है. एट फर्स्ट लोकेशन ऐड BLR. सो नाउ इन टुडेज लेक्चर वी विल लर्न, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ पेस्ट करके, लेक्चर 11 part 3. Okay, and the very first function we are going to learn is append function. Okay, append function क्या है? It does the similar work. आज जो भी मतलब आज इसके बाद एक दो फंक्शन जो भी देखेंगे, so those will be related to adding the items in the list. Okay, adding the items in the list. So let me just create a list. List1 equals to political party. तो मैं पॉलिटिकल पार्टीज नाम से एक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ. ठीक है. तो मैं क्रिएट अ लिस्ट, एक AI से लिस्ट बनाते हैं. क्रिएट ए लिस्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. करेक्ट. इन इंडिया, इंडियन ऐड इंडियन पार्टीज, ऐड इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज. ऐसे कुछ मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया. अरे यार क्या कर रहा है. लेट मी जस्ट रन दिस and let me just get this party. So now I have these many parties. अभी के लिए ये सब भूल जाओ, ये सब भूल जाओ और बस ये देखो कि ये सारी पार्टीज हैं हमारे पास. ठीक है. All these parties that we have, political parties. So this is the list. This is the list. This is the list that we have. ठीक है. This is the list that we have of political parties. ठीक है.
फर्स्ट क्या देखा हमने, उसके अंदर है आईएनसी है, बीजेपी है, एंड so many different parties that we have in this parties. Okay, so now so now I want to add one more my own party in this political party, Indian political parties के अंदर मुझे मेरी खुद की एक political party add करनी है. So what I will say political party. Okay, I will use this append function, this one, append function, and I will say all Vikas India party. Okay, मेरी पार्टी का नाम है all Vikas party, या आप कहते हैं ऑल एआई लर्नर्स, ऑल एआई लर्नर्स पार्टी. ठीक है, ऑल एआई लर्नर्स पार्टी, ऐसे मेरे पार्टी का नाम है. व्हाट आई विल से, ये मेन जो मेरी लॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी की जो लिस्ट है, उसके अंदर आई विल बी एडिंग माई ओन पार्टी. ठीक है, माई ओन पार्टी. सो इफ आई से पेन डॉट मेरी खुद की पार्टी का नाम, एंड इफ आई रन दिस, so my party ka naam got added at the end. Okay, at the end. So this is how you can. ah, okay, हमने डिलीट कर दिया कुछ. फिर से क्रिएट करना पड़ेगा सारा ही. पॉलिटिकल पार्टी इक्वल टू, ये मैंने डाल दिया. इसके अंदर ये नहीं था. Now it is there. ठीक है, so एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ और थोड़ा अच्छे से समझेगा. लिस्ट वन इज इक्वल्स टू, लेट्स से आई हैव 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7. इफ आई से लिस्ट वन डॉट अपेंड, ठीक है, लिस्ट वन डॉट अपेंड, इसके अंदर ऐड कर दो नंबर, ये वर्ड ऐड कर दो नंबर. सो इफ आई आस्क फॉर लिस्ट वन, आई विल गेट दिस ऑल दीज थिंग्स एंड दिस नंबर 2. ओके, एंड दिस नंबर 2. तो यही सेम ये पार्टीज थी, इसके अंदर हमने ऑल एआई लर्नर्स पार्टी ऐड कर दी. तो कुछ इस तरीके से दिखता है. सो यहाँ पर व्हेन यू सी this is adding at the end automatically. This is adding at the end automatically. Okay, so what notes we can do? Append function adds elements at the end. Okay, at the end. So in the insert function क्या हो रहा था? In the insert function we had to mention the location of the item. Okay, we had to mention the location of the item. So at the first location इसको ऐड कर दो तो हमें first location मिल रहा है, right? At last location इसको ऐड कर दो तो हमें last location पे कोलकाता मिल रहा था. Okay, so this is the difference between insert and append. क्या? So append function will automatically add at the end. Okay, at the end. So what if, sir, if I add the same list we are taking, okay, list one, और इसके अंदर मैं बोल रहा हूँ list one dot append. Okay, list one dot append. And what if I add multiple elements, जैसे this one, जैसे I wanted to add number 8 9 10. Okay, I wanted to add 8 9 10. ठीक है, so if I run this, you can see this is not getting added as a multiple, this is getting added as a single item. Okay, this is getting added as a single item. ठीक है, so if I will check the item, like let's say list one, and अगर मैं last element if I check, तो ये पूरा आ जाएगा. ठीक है, this the complete, this one is getting added as a single element in the list. Okay, as a single element in the list. So to solve this problem, for example, मुझे इस तरीके से नहीं चाहिए था. मुझे चाहिए था कि 7 8 9 ये सब different ऐड हो.
So to solve this problem, there is one more function, that is extend function. Okay, extend function. This is also some one function which is related to adding an item in the list. ठीक है, so extend function अगर मैं use करता हूँ, so this is my list one, उसके अंदर ये बहुत सारी चीजें हैं. I wanted to add this number of a string, so you can see ये अलग मतलब इसको तोड़ के इसने ऐड कर दिया. ठीक है, इसको तोड़ के ऐड कर दिया. और एक सिंपल एग्जांपल देना था मुझे. लेट्स से मुझे चाहिए, मुझे 88 ऐड करना है, तो 88 will int object is not variable, तो कुछ और लिख रहा हूँ. 88 हो गया है तो okay, so it is getting added like this. It is getting added like this. So let me just add one more list in it. ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर किया था. ठीक है, यही वाला उठाते हैं, यही वाला उठाते हैं. लेट्स सी अगर कुछ इश्यू आता है तो एक्सटेंड. ठीक है, एक्सटेंड फंक्शन. So this is my list one. This is my other elements जो कि again list में. So on this it will get added as a single item. Okay, single item. Append में क्या हो रहा था? These are getting added as a one item. But now in the extend, these all are getting added as a single items. You can see single item. Okay, single item. So can anyone समझ में आया क्या? ये थोड़ा क्विक हो गया. नो, इज इट क्लियर? यस, नो. क्या क्या सीखा हमने? इंसर्ट, अपेंड एंड एक्सटेंड. ओके, इंसर्ट, अपेंड एंड एक्सटेंड. इंसर्ट क्या करेगा? इट विल ऐड द एलिमेंट्स बट ऑन अ सेड लोकेशन. अपेंड एंड एक्सटेंड क्या करेगा? ये लास्ट में ही ऐड करेगा. यू कैन सी ये लास्ट में ही ऐड कर रहा है. बट एक्सटेंड क्या करेगा? तोड़ के ऐड करेगा. अपेंड विल ऐड एज इट. ठीक है, जैसा है वैसे ही ऐड कर देगा. दिस इज added as a single item. So this is the only difference. This is the only difference between append and extend. ठीक है, अब और दोनों भी ऐड करेंगे at the end. ठीक है, is it clear or no? Anyone? Yes, yes, yes. Okay. Yes, yes. अगर किसी को डाउट है तो वी कैन डिस्कस. ठीक है, किसी को छोटा मोटा डाउट है तो वी कैन डिस्कस. वी कैन डिस्कस. So can anyone help me with this problem? Can anyone help me with this problem? So I have this list. Okay, I have this list. List है 33, 44, 55, 66, 77. Okay, I have list 2, list 2. Okay, list 1 करते हैं इसको. List 1, list 1. मेरे पास और एक list 2 है. ठीक है, खुद ही क्रिएट कर देते हैं. 88, 99 and 00. तो कुछ इस तरीके से मेरे पास लिस्ट 2 है. ओके, एंड आई हैव. ठीक, अभी के लिए इतना. ठीक. सो नाउ मुझे माय फर्स्ट क्वेश्चन इज आई वांट टू ऐड list 2 in list 1. Okay, list 2 in list 1 as a single item. Okay, this is my first question. My second question is I want to add list add number in list 1 as a single item at location 3. Okay, as location 3. And my next question is I want to add list 2 in list 1 as a multiple item. Okay, as a multiple item. So help me solving the first problem first. Okay, first problem first. So tell me first problem के लिए क्या which मतलब तीनों के लिए भी बता सकते हो जिसको पता है. तीनों का ही सॉल्व करके आप बता सकते हो. अभी के लिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसके लिए क्या आंसर है
Shiva Priya says, which type of question we got on these append and extend? That's a very good question. So people ask like, okay, so give me a difference between append and extend. Okay, append and extend. So these questions will be asked for entry level interviews. So you will say append and extend are both used to add the elements at the end of the list, but in the append, it will add as a if we want to add multiple items, then it will still add as a single item like this. जो हमने ऊपर देखा. But in extend, if you add a list, another list, it will get added as a single items like this. Okay. Then you have to give one example also. Okay. Then you have to give one example also. So let me see किसने किसने क्या क्या आंसर दिया है. So for the first question, he says list one dot append list two. क्या है first question? I want to add list two and list one. List two, list one क्या add करना है? This is right. List टू लिस्ट वन में ऐड करना है. दिस इज राइट. आई विल कॉपी. आई एम कॉपिंग दिस. लिस्ट टू के अंदर लिस्ट वन जाएगा. सो दिस इज अ प्रॉब्लम. ओके. तो अभी क्या हो रहा है लिस्ट टू के अंदर. अच्छा मैंने क्या बोला लिस्ट टू के अंदर लिस्ट टू इन अ लिस्ट वन. तो यहाँ पर लिस्ट वन चाहिए, यहाँ पर लिस्ट टू चाहिए हम. So this is a problem. So we need to very careful कि what we are adding where. So this is also right. This is also right. Okay. So let me just write it here. I want to add I want to add list 2. I want to add list 2 in list 1. Okay, list 2 in list 1. If I run this, I will get an error. But so what we are missing? List 1. Da, 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 da. Am I missing something? Hmm, ये तो गलत है. अच्छा ये रन ही नहीं किया हमने. बढ़िया. So if I now ask for list 1, I will get an entire list as a single item भी बोला था हमने. ठीक है, as a single item. So next question guys. Next question. Question 2. Everyone, be quick. Hmm, Okay, this is right now. Anuja says insert at location 3 number. Okay. Coming back to your question, Shivpriya, again, usually interviewer asks like कि लिस्ट. सबसे पहले अगर लिस्ट पे क्वेश्चन पूछना है, if they want to ask a question on list, they will ask what is the difference between list and tuple. So when we will learn tuple, I will also explain this. But you must know list is a data type which can take multiple different data types. List is a data type which is a mutable and it is fast and all those things. Okay, that we have learned in the first lecture of list. Append and extend पे there will be only this question. Append करके दिखाओ, extend करके दिखाओ. Okay, and the difference between append and extend. Okay, lot of folks added. लोकेशन 3 पे नंबर ऐड करो, लोकेशन 3 पे नंबर ऐड करो. लिस्ट 1 में बोला था हमने. हाँ लिस्ट 1 में बोला था. लोकेशन 3 पे नंबर ऐड करो. Okay, so let's pick this one and try. Okay, let's pick this one and try. So this should be a list. This should be a list. If I run this, now if I run this, the number will get added. So अभी मैं फिर से रन किया तो इसलिए फिर से चल गया. तो अभी मैं इसको एंड आउट करता हूँ, इसको मैं फिर से रन करता हूँ. अभी मैं इसको फिर से रन करूंगा, मैं इसको रन करूंगा. So the number will get added at location what 3, right? 0th, 1st, 2nd and 3rd, right? So now coming back to the last question guys. अरे यार मेरा AI प्रॉब्लम दे देता है. So coming back to the last question, give me the answer of this. I want to add a list 2 in list 1 as multiple items. Okay, okay, ये गलत है. ठीक है, ये डबल कोट्स में मत डालना प्लीज. सो डबल कोट्स में क्या इशू होगा, आई विल टेल यू. हाँ यस. सो यू ऑलरेडी गॉट इट, तो अच्छी बात है. So if I run this and if I run this list 1 again, तो ये ना
ये लिस्ट ऐड हो जाएगी इंस्टेड ऑफ वी वांट दिस एज आउटपुट. ओके, दिस एज आउटपुट. So deleting this one again. Okay, so list 2 के अंदर list 2, ये भी गलत है, ये भी गलत है. list 2 के अंदर list 2 कैसे आ गया? So commenting this out. So I want to add list 2 in list 1 as a list 2 in list 1 as a multiple item. So if I run this and if I run this, so this will get added as a multiple items. Okay, multiple items. So I hope everyone clear हो चुका है. And now we are good with adding the items in the list. Okay, adding the items in the list. Okay, got it. This one is right. Cool. And from YouTube पे क्या बोल रहे हैं लोग? Keep going brother. Thank you. ओमकार बोल रहा है very very good sir. Thank you. Okay, now let's learn guys about deleting the items from list. ओके, अभी हमने क्या क्या देखा? एडिंग द आइटम. ठीक है, एडिंग द आइटम, इसमें हमने इंसर्ट देखा, अपेंड देखा एंड एक्सटेंड देखा. ओके, इंसर्ट देखा, अपेंड देखा एंड एक्सटेंड. सो नाउ इफ वी वांट टू लर्न कि डिलीट कैसे कर सकते हैं, सो अगेन कम टू द फर्स्ट टाइम. लिस्ट इज अ म्यूटेबल. लिस्ट इज व्हाट? यहाँ पर है नहीं शायद, यहाँ पर है. यस, लिस्ट इज म्यूटेबल. इट कैन एडिट, चेंज, ऐड एंड रिमूव एंड डिलीट. तो ऐड हमने अभी देख लिया, रिमूव एंड डिलीट हम अभी देख लेंगे. ठीक है, रिमूव एंड डिलीट हम अभी देख लेंगे. तो रिमूव सबसे पहले वही फंक्शन पढ़ते हैं. ठीक है, so there is a function called as remove. Okay, there is a function called as remove. So let me create a list of items. बना दो यार, 23, 45, Krishna and Madhava, and 45, put something numbers and some numbers. Okay, some numbers. So if I ask for list 1, so it will give me this list. ठीक है, this list. So for example, I want to delete this 45. Okay, I want to delete this 45. Yeah, remove बोल दो. So I will say remove. Okay, I will say remove and I will say 45. ठीक है, I will say 45. So what will happen? मैं list 1 कर देता हूँ फिर से. If I run this, 45 will get vanished. Okay, 45 will get vanished. ठीक है. अगेन सिमिलरली अगर मैं बोल दूँ लिस्ट 1 डॉट, तो यहाँ पर अगर रन करेंगे तो एरर आ जाएगा. सेम ले रहा हूँ मैं. इफ आई वांट टू रिमूव 54, ठीक है, इफ आई वांट टू रिमूव 54, तो 54 विल गेट रिमूव. ठीक है, यहाँ पर 54 था गाइस, दैट गॉट रिमूव. तो इतना सिंपल है रिमूव. ठीक है, इतना सिंपल है रिमूव. ठीक है, so I hope everyone got this. Okay, everyone got this. उसके बाद है पॉप फंक्शन. ठीक है, पॉप फंक्शन क्या करेगा? पॉप कॉन्स क्या होता है? पॉप कॉन्स क्या होता है? कॉन्स को पॉप करना मतलब फोड़ना. ठीक है, मतलब उनके अंदर से वो एलिमेंट पॉप आउट करना. ठीक है, पॉप आउट करना. तो फॉर एग्जांपल इफ आई ऐड हेयर रमेश, ठीक है, if I want to add, I will add here Ramesh here, and if I say list 1 dot pop, okay, list 1 dot pop, and if I run this, Ramesh is gone. Okay, Ramesh is gone. So what pop does? Pop does, it will remove the last item. Last item. Okay, so it is exactly opposite to what? अपेंड और एक्सटेंड बोल दो. वो लास्ट में ऐड करते हैं, ये लास्ट से निकाल देता है. ठीक है, वो लास्ट में ऐड करते हैं, ये लास्ट में से निकाल देता है. ठीक है, इफ आई रन दिस अगेन,
9, अच्छा इसको मैं, इन दोनों को मैं यहाँ पर लेता हूँ, ठीक है। इफ आई रिमूव दिस, इफ आई रन दिस अगेन 9 चले गया, इफ आई रन दिस अगेन 23 चले गया, इफ आई रन दिस अगेन 54 चले गया, माधवा गॉन, कृष्णा गॉन, 44 गॉन, 23 गॉन। इफ आई रन दिस अगेन आई विल गेट एन एरर, ठीक है, आई विल गेट एन एरर। So I'm running this, I'm running this. So this is how it will remove the last item. Okay, this is how it will remove that. So remove में क्या सीखा हमने कि you directly have to mention the item name. Okay, item whatever entities. ठीक है, कृष्णा को या 45 को, whatever the item you want to delete or remove, you need to mention it. ठीक है, you need to mention it. But in the pop, what you have to do is, what you have to do is, you don't have to mention, it will automatically delete the last item. Okay, it will automatically delete the last item. इसके बाद हमने देखना है clear फंक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ क्लियर कर देगा ये, ठीक है, मेमोरी क्लियर कर देगा कुछ। So if I say list1 dot clear, okay, list1 dot clear, if I run this, तो list1 बिल्कुल ही क्लियर कर दिया इसने, ठीक है। इट हैज रिमूव्ड ऑल द आइटम्स बट इट हैज नॉट रिमूव्ड द लिस्ट, ठीक है। लिस्ट है अभी भी वो, बट उसके अंदर के जो भी आइटम्स हैं, ठीक है, उसके अंदर के जो भी आइटम्स हैं, दोज हैव बीन रिमूव्ड। ये बस क्लियर कर दिया उसने, क्लीन अप कर दिया, योर लिस्ट इज एम्प्टी नाउ, ओके, लिस्ट इज एम्प्टी नाउ। So this is how clear, this is what pop does, this is what remove does, ठीक है। Now let's try and understand delete. delete delete फंक्शन मतलब, अगर मैं list1 ले लूँ, list1 मेरा कुछ इस तरीके से है, अरे यार list1 ये फिर से लेना पड़ेगा। list1, so my list1 looks like this. But if I say del, okay, if I say del list1, del meaning delete, so it will delete entirely. तो अगर मैं अभी list1 मांगता हूँ, so there is no list1, है ही नहीं, does not exist. Okay, but clear में क्या हो रहा था? What was happening in the clear? If I run this again, okay, if I run this again, and even if I ask for list1, it will give you the list1, right? It will give you the list1. Delete an empty list, but delete will delete the list और ये सारा ही data entirely from the system. Okay, entirely from the system. Got it? Got it? क्या क्या सीखा हमने? Can anyone list? Someone question. Good. Pop with index remove which item? Pop with index remove which item? So I think let's try. Index जो भी डालोगे तो वो index उड़ा देता है. Let me try. Yes, I missed that. So let's take this one. Let's take this one. If I want to remove this 45 again, so instead of writing 45 जैसे हम remove में कर रहे थे, right? Instead of writing 45, you need to mention an index there. Okay, you need to mention an index there. If you run this, you'll get the item will removed. Item will get removed. Okay, and again, if you want to remove any particular string also, you can do like this. Remove Ramesh and नहीं हो गया क्या क्या string object cannot interpret as an integer. अरे of course क्योंकि इसके अंदर हमें हमें डालना है index length of list1. So नहीं गलत हो रहा है, -1 से होगा, yes हो गया, -1 से हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट एलिमेंट्स का इंडेक्स क्या है? -1. यहाँ से काउंट करें तो शायद वो मिल गया रहता था, ठीक है। So yes, you can mention the index also, but you should not mention the item itself, because in the remove you can mention the item and it will get deleted. Okay, it will get deleted. So I hope this one is resolved. This one is resolved.
questions other than this? Any questions other than this? Okay. No. Cool. So if there is no question, we run the question and answer session, right? So let me uh, ask you a question and you need to write the answer. Yeah, you need to write the answer. तो सबसे पहले तो लिस्ट मतलब पूरे फंक्शंस बताओ कौन से फंक्शंस which functions do we use to remove and delete or clear or pop out from the list item. Everyone, सब लिखो जो जो हमने सीखा है. Everything in the comments. In the comments, of course. So okay. Someone says remove, pop, delete, remove, pop, insert नहीं होगा. Insert is used for adding an items. Clear, delete. Okay. Clear, clear counted. Remove, pop, clear. Remove, pop, clear. Delete, clear. Remove, pop, delete, clear. Okay. Cool. So which function is used to remove carefully सुनना ठीक है. Which function is used to remove the items using the item itself. कितने ध्यान. Okay. remove ठीक है. which function is used which function is used to delete the items from the list. So question carefully. Yes, clear is the answer actually. What I have said, which function is used to delete the items, not the list itself. ठीक है. अगर मैं मतलब that's why I changed a little bit question. Instead of using clear word, I've used a delete word. But I've said delete the item from the list. Okay, delete the items from the list. So I think we can also delete the items from the list one by one also. So let me याद आ गया तो सीख लेते हैं, है ना? So let's say you have this index one. ठीक है. Index one में क्या है हमारे पास 45. So if you say del index one, if you run this, and now if you ask for list one, so what will happen? ये आपका फर्स्ट आइटम चले गया यहाँ से. ठीक है. फर्स्ट आइटम चले गया. ओके. तो कुछ इस तरीके से भी हम एक एक आइटम चेंज डिलीट कर सकते हैं. नाउ इफ आई से del list one ऑफ रमेश को डिलीट कर दो. तो ये डिलीट एकदम ही ऐसा है कि मतलब साफ ही कर देता है. ये स्ट्रिंग इज नॉट इंडेक्स डालना है गाइस. ठीक है. अगेन तो इफ आई रिमूव तो रमेश भी चले गया और ये भी चले गया. ठीक है. तो ये भी होता है कुछ इस तरीके से. ओके. सो ओके, लास्ट क्वेश्चन. यस अमोल, अमोल लास्ट क्वेश्चन. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन. which functions okay no function which function is used to delete the last item. pop pop pop. cool. या मतलब टाइप ही करके रखा था क्या, यही पूछेगा भाई ये बंदा. सही है. चलो समझ में तो आ गया है. ठीक है सबको. सो दिस इज अ गुड न्यूज दैट पीपल आर गेटिंग. ओके. सो इफ अगर आपको समझ में आ रहा है ना तो यू नीड टू प्रैक्टिस. एंड इफ यू आर प्रैक्टिसिंग यू इफ देन इट विल गेट सॉलिड. मतलब आपके जो टेम्पररी मेमोरी है, राइट. सो वी हैव टू मेमोरीज. एक है टेम्पररी मेमोरी और एक है परमानेंट मेमोरी. ठीक है.
टेम्पररी मेमोरी रहती है यहाँ पर कॉर्टेक्स में, टेम्पररी मेमोरी रहती है यहाँ पर, कुछ तो कहते हैं, मैं भूल गया उसको, ठीक है। सो नाउ इट इज गेटिंग इनटू योर टेम्पररी मेमोरी, यहाँ पर है, आपको लगेगा यार बढ़िया है, बंदा तो अच्छा सीख रहा है, मेरे को तो समझ रहा है ना। बट इफ यू डोंट प्रैक्टिस इट, तो ये यहाँ से वैनिश हो जाएगा। व्हेन यू प्रैक्टिस तो ये यहाँ पर आएगा बीच में, इन दिस लेयर, कि आपके टेम्पररी एंड परमानेंट के बीच में कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो आप यूट्यूब वीडियो फिर से देख रहे हो, ठीक है, यू आर गोइंग थ्रू ऑल दिस रिकॉर्डिंग्स एंड देन यू आर गोइंग थ्रू ऑल दिस नोट्स जो हम गिटहब पे डाल रहे हैं, ठीक है, ऑल दिस नोट्स, एंड देन इट विल कम टू वेयर हियर। बट व्हेन यू कंप्लीट द असाइनमेंट्स, तब क्या होगा, यू विल पुश योर माइंड, विल पुश योर माइंड टू सॉल्व, टू थिंक, है ना। ये नोट्स तो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये नोट्स तो मैं बना रहा हूँ, तो आई एम चैलेंजिंग माई माइंड कि अरे ये ऐसे करो। मैं भी भूल जा रहा हूँ बहुत सारी चीजें, जैसे यहाँ पर मैं ये भूल गया था, दिस वन, राइट, ऑल्सो शिवा प्रिया रिमाइंड मी ऑफ दिस वन, ओके। So I'm challenging my mind. But when you will solve the assignments, you will also challenge yourself, and eventually you will also get मतलब वो आपके permanent mind में आ जाएगा, ठीक है। So cool है, सही है, सही है। So quickly एक दो functions और cover करते हैं, and we can close. We are done for the day, ठीक है, we are done for the day. So let's learn what is sorting in list, ठीक है, what is sorting in the list, ठीक है। सॉर्टिंग के हमेशा दो टाइप होते हैं, एक असेंडिंग, असेंडिंग होता है, ठीक है, असेंडिंग ये डायरेक्शन में पकड़ लो, और एक होता है डिसेंडिंग, स्पेलिंग देख लेना भाई आप, ठीक है, डिसेंडिंग ये डायरेक्शन में पकड़ लो, ठीक है। मतलब असेंडिंग में रहेगा फॉर एग्जांपल 0, डिसेंडिंग में रहेगा 10, राइट, और सिमिलरली डिसेंडिंग में रहेगा 10 यहाँ पर, और असेंड मतलब यहाँ पर रहेगा 0, ओके। असेंडिंग मतलब छोटा बच्चा हाइट एंड बड़े बच्चे पीछे खड़े, ठीक है, वो हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, राइट। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड how we can sort the items in the list. So let's say I have taken a list of random numbers 2 3 1 0 5 something, some random numbers, ठीक है, ये कुछ random number मैंने ले लिए, and I'm seeing ये मेरा list है। So you can see list is a ordered data type, जो जैसे मैंने लिखा है उसी तरीके से आ रहा है, okay? But if I use the sort function, guys, if I use the sort function, you can see कुछ भी नहीं, you can see nothing, but now you can see 1 1 2 3 5 6 8 and 81, okay, and 81। तो इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इधर x and आप बोल दो sorted of x, so this will also will sort, ठीक है। तो sort भी चलता है, sorted भी चलता है। These both functions are used for ascending, okay, these both functions are used for ascending, ठीक है, used for ascending। and what we do for descending, एक एक textual example भी लेते हैं, ठीक है। let's say again the famous example, cities in, in America, give me a list for cities in America. Anyone who wants any question there? Yeah, tell me. Okay, no questions. अरे बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं अमेरिकन सिटीज, इतनी सारी अमेरिकन सिटीज हैं, ठीक है। So when I run this, it will look like this. But now when I say American cities dot sort function लगा देते हैं। Now if I ask for American cities, so it should look like this: A B C C C D E F G H H I J K L M N O P P Q R S S S S S T and W, right? So alphabetically
अल्फाबेटिकली ऑर्डर्ड हो गया। ओके, अल्फाबेटिकली दीज गॉट ऑर्डर्ड। तो टेक्स्ट पे मतलब टेक्सचुअल डेटा रहा तो भी चल जाएगा, न्यूमेरिकल डेटा रहा तो भी चल जाएगा। ओके ओके, एंड देन देयर इज अनदर एग्जांपल फॉर लेट्स से डिसेंडिंग के लिए अभी एग्जांपल देखते हैं। ओके, डिसेंडिंग के लिए एग्जांपल देखते हैं। सेम एग्जांपल्स उठाएंगे, सेम एग्जांपल्स उठाएंगे। यहाँ पर मैं डिसेंडिंग लाल डाल देता हूँ, डिसेंडिंग सॉर्टिंग। so so the very first is the very first is हमने सीखा था स्लाइसिंग में कि यहाँ पर नेगेटिव स्टेप साइज डाल दो। ओके, नेगेटिव स्टेप साइज डाल दो, यू विल गेट ए डिसेंडिंग ऑर्डर। अरे वन क्यों नहीं आया? अच्छा, ये वन एट, अच्छा इसने बस रिवर्स कर दिया। ओके, दिस इज रिवर्सिंग, रिवर्सिंग ए लिस्ट, रिवर्सिंग है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमको क्या करना चाहिए फिर? एक्स डॉट सॉर्ट। ठीक है, एक्स डॉट सॉर्ट। तो मैं अगर ये चला दूँ, अगर मैं ये चला दूँ तो व्हाट विल हैपन? ये सारे असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, राइट? असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। नाउ नाउ इफ आई रन दिस, अभी ये असेंडिंग ऑर्डर में है, राइट? इफ आई रन दिस, ये क्या कर देगा? ये क्या कर देगा? असेंडिंग ऑर्डर। Okay, now this will reverse my list. So you can see 81, 7, 6, 3 and so on. So descending कैसे करना है? सबसे first method है, whatever list you have, you will first uh, order will order or sort that list in a ascending order, and then you will just reverse the list. Okay, you just reverse the list. The second way क्या है हमारे पास? What is the second way? Let's explore what is the second. So you can say you can say x dot sort. ओके, x डॉट सॉर्ट, यहाँ पर आएगा रिवर्स फंक्शन, उसको ट्रू कर दो। ओके, यहाँ पे आएगा रिवर्स फंक्शन, उसको ट्रू कर दो, एंड यू आस्क फॉर x, यू गेट x इन अ सेम ऑर्डर। ओके, इन अ सेम ऑर्डर। कैन वी डू इट यूजिंग सॉर्टेड फंक्शन ऑल्सो? राइट, देयर कैन बी अ क्वेश्चन, राइट? कैन बी यूजिंग, लेट्स से मैंने बोल दिया y इक्वल्स टू सॉर्टेड ऑफ x and reverse equals to true. Okay, reverse equals to, if I ask for it, I will get this. Okay, I will get this. Reverse equals to, मतलब meaning the in a reverse sort. So there are three ways. First, sort के अंदर भी reverse equals to कर दो, या sorted के अंदर भी reverse equals to कर दो, आपको मिल जाएगा. But most of the time in the interview, वो ना ट्रिकी खेल जाते हैं इंटरव्यूअर्स क्या कह देंगे? Reverse a given list but do not use sort or sorted function. ठीक है, ये इवन इन द इंटरव्यू, एडवांस इंटरव्यूज में पूछा जाता है। हाँ, लाइक सीनियर लेवल पे भी ये पूछा जाता है। इवन फॉर मी इन माय रीसेंट इंटरव्यूज पीपल आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ये बहुत थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। आप बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस कर प्रैक्टिस करके चले जाते हो, बट यू डोंट रिमेम्बर दिस कि जस्ट बिकॉज ऑफ रिवर्स मतलब स्लाइसिंग या नेगेटिव स्टेप साइज आप रिवर्स कर सकते हो किसी लिस्ट को। यू जस्ट हैव टू अपेंड और सॉर्ट द लिस्ट इन द असेंडिंग ऑर्डर। ओके, इन द असेंडिंग ऑर्डर। थोड़ा और भी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर भी तो आप सॉर्ट ही कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर भी तो आप सॉर्ट ही कर रहे हो, तो वह इसके पीछे एक लॉजिक होता है। तो इफ आई गिव यू दैट लॉजिक, ठीक है, तो शायद अभी अगर समझ में नहीं भी आता है ना तो वरी नहीं है, ठीक है, समझ में नहीं भी आता है वरी नहीं है, बट जस्ट आई वांट टू गिव यू द लॉजिक बिहाइंड दिस सॉर्ट एंड सॉर्टेड फंक्शन। ठीक है, इसके पीछे क्या होता है आई विल टेल यू। So we will learn this for loop. So there will be a for I in a range of, अच्छा ये I गया, ठीक है, for I in a range फंक्शन देखे हमने, लेंथ ऑफ x मतलब ये कुछ 4 and 4 8 है, ठीक है, लेंथ ऑफ x मीनिंग 8 नंबर्स आ जाएंगे यहाँ पर। देन यहाँ पर और एक लूप चल रहा है,
देन यहाँ पर भी लेंथ ऑफ x है, i+1 है, मतलब जो भी i आएगा उसमें +1 होगा. It will just go ahead if we when you say +1 and it will check for I का इंडेक्स अगर 1 इंडेक्स 2 अगर सेकेंड इंडेक्स 3 से बड़ा है तो बस उसको अगर बड़ा है अगर 2 तब ये छोटा है राइट 2 अभी के लिए तो इट विल स्टे हियर बट 3 एंड 1 में 3 इज ग्रेटर तो ये इसको स्वाइप कर दे फिर अगेन कंपेयर करेगा स्वाइप करेगा एट द एंड यू विल गेट x इन दिस सॉर्टेड मैनर. ओके तो आप जो when you see this sort function so this is the product of this. ठीक है इस sorted के पीछे behind this sorted function there is a logic. ठीक है ये कोड किसी ने लिखा है कहीं पे पाइथन में and it has stored and now you are using this code directly using this function that is called as sorted. ठीक है तो हर एक जो भी आप देख रहे हो ठीक है whatever if you are reading learning extend तो extend के पीछे भी कुछ ऐसा सिमिलर सा लॉजिक रहेगा. ठीक है सिमिलर सा लॉजिक रहेगा. So many of the time in the interview जो advanced interview रहता है they will ask you to write this kind of code also but advanced let's say you have 4 5 years of experience and they will ask you. ठीक है so it is about time we have covered quite a few functions. So very first function that we have learned is insert function कल से. ठीक है insert function में आपको लोकेशन देना होता है the item that you have to give then it will add. In the append function you don't have to mention the location but it will add at the end but it will add as a single item like single item as a single item but in the extend it will add as a multiple items or separate items. Then we have seen how to delete the items from the list. The very first function was remove where like जहाँ पर आपको बस you just have to mention the item itself right item itself it will remove. Pop will remove what it will remove the last element until you mention the index. Okay until you mention the index. Okay so you have to mention the index so 45 का index चलेगा 45 चलेगा -1 meaning रमेश चलेगा. Then we have seen the clear function. Clear क्या करेगा items clear कर देगा but it will not delete the list. Okay there will be a list empty list but delete बहुत danger. It deletes the list entirely but it can also delete the element guys. ठीक है तो बस आपको बस indexing यहाँ पर समझना है. ठीक है indexing समझ. Then we have seen the sorting in the ascending order descending order. Ascending के लिए हम sort use कर रहे हैं sorted use कर रहे हैं. ठीक है and it also works on the string data. Okay string data. Then we have seen descending order. हमने इसके descending के लिए 3 लॉजिक है. First is sort, second is sorted. उसमें हमें बस you just have to say reverse equals to 2, reverse equals to 2. But without using this reverse function, we can say you can just sort in the ascending order and then you will just reverse the list. Okay, reverse the list. Any doubt? Any doubt? Any doubt? Any doubt? Let me give you 1 minute for doubt. Rishabh Singh says clear. Thanks, Rishabh. I mean, I think you are answering to the question. Okay, if you have understood everything, then type in the comments. Otherwise, if you have any छोटा मोटा question, कि ये नहीं समझ में आ गया, अब मैं क्या करूँ? Question related to assignment, question related to career, question related to GitHub, VS Code, Google Colab, whatever we are teaching, learning, why we are learning, any questions, guys. Any questions. If you have understood, type in the comments. Then it's an indicator that you are getting what I'm teaching, and I can happily sleep after this. दो ही लोगों को समझाएगा. Rest people.
कोई भी क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन? ओके कूल विन. ओके द टाइम इज अप. टाइम इज अप. टाइम इज अप. ऑलराइट सो मिलते हैं कल इसी समय. ठीक है at 9:30. Okay, I will update the notes in the group, right? And I will also so there is a recording on the YouTube पे जाओ, recording देखो, समझ लो what we are learning. प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इससे आगे और भी थोड़ा और इंटरेस्टिंग चीज़ें आएगी. बट बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें भूल की हो जाएंगी. तो you need to practice. Complete the assignments and that's it. Those who are on YouTube, if you want to join the group, यहाँ पर लिंक है या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी. एंड गिटहब का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. यू विल गेट द नोट्स देयर. ऑलराइट गाइस, सी यू टुमारो एंड गुड नाइट. If you have questions, you can still drop in the group. ठीक है, or in the group.